Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are when you're watching this live stream. As always, brought to you by Dafa News on my cricket channel called Are You Here for the Cricket? हम आज के शो में बात करेंगे कल के मैच के बारे में यानी कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान और थोड़ी नजर डालेंगे आज के मैच में sorry न्यूजीलैंड versus South Africa what am I saying and today's match between India and Sri Lanka. लेकिन before I take your question, before I start getting into the back and forth, I want to ask you a question दोस्तों. क्या आप लोग भी मेरी तरह हैरान हैं कि इतने कैप्टन इस वर्ल्ड कप में अभी तक टॉस जीतकर फील्डिंग लेना चाहते हैं, चेस करना पसंद करते हैं व्हेन ड्यू हैज बीन वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट. अब तक 32 मैच हो चुके हैं. मैंने केवल 3 बार दोस्तों देखा है किसी कैप्टन किसी प्लेयर को टॉवल लेकर बॉल पे रब करना. आई डोंट नो व्हाई पीपल, फैंस, कैप्टन्स, एनालिस्ट, एवरीवन इज हार्पिंग ऑन अबाउट दिस सो कॉल्ड ड्यू फैक्टर. कहां है ड्यू? इतनी बार कैप्टन ड्यू के नाम पे टॉस जीतकर फील्डिंग ले चुके हैं. बाबर आजम, टॉम लेथम, नॉट वंस बट ट्वाइस. टॉम लेथम द स्टैंड इन न्यूजीलैंड कैप्टन ने ड्यू फैक्टर कहकर पिछले 2 मैच में फील्डिंग लिया. एक मैच में ऑस्ट्रेलिया got to 388 and yesterday South Africa got to 358. Josh Butler, the most dismal captain of this whole tournament against South Africa, the same South Africa that puts up 400 with their eyes shut, he said we're expecting dew when he put them into bat at the Wankhede. There's enough evidence, enough examples of the absence of the dew factor and not enough teams having the chasing skill or having the bowling to put teams under the pump when they say go ahead and bat first. इसके बावजूद टीम्स टॉस करना पसंद क्यों कर रहे हैं? मैंने टूर्नामेंट से पहले कहा था कि अगर ड्यू आएगा तो वो दिवाली के बाद आएगा. दिवाली कब है? नवंबर 12. लेकिन अक्टूबर 5 से लेकर बहुत सारे कैप्टन ये डिसीजन ले रहे हैं और ये फ्रैंकली मेरे समझ से बाहर है. मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करूंगा. I'm going to read out some facts here. Out of 32 matches so far, only 6 times has the captain who's won the toss and opted to field ended up on the winning side. यानी कि 32 मैच में से केवल 6 बार दोस्तों जो कैप्टन ने कहा कि हम फील्डिंग करेंगे उसकी टीम जीती है. वर्ल्ड कप ओपनर टॉम लेथम opted to field. New Zealand kept England to 282 and won by 9 wickets. Is that the match that spread this myth कि you can chase? I'll tell you more. और उसी दिन से कप्तान ये गलतफहमी पालने लगे कि भैया हाँ हम टॉस जीतकर चेस कर सकते हैं. गलतफहमी नंबर 1. आगे बढ़े. Match number 3, Shakib Al Hasan opted to chase against Afghanistan and Bangladesh knocked off a target of just 157. उसके बाद again New Zealand put Bangladesh into bat and chased what? Just 246. India put Pakistan in and chased 192. Rohit again won the toss and put New Zealand in, and India chased successfully 274. And the last team to win after opting to field was Afghanistan, who put Sri Lanka into bat this week and chased 242. Once again, my friends, that is 6 out of 32 matches. And the highest target chased after opting to bowl, the 282 that I mentioned in the first match. और अब ये आंकड़े देखिए. 13 बार टॉस जीतकर फील्डिंग देने वाली टीम हार चुकी है. यानी कि 13 times the team that has chosen to field has ended up losing. England did this to South Africa and paid the price. Pakistan did this to Australia, an opening stand of 259, and they paid the price. New Zealand, like I said, did this to Australia and South Africa in back-to-back matches and paid the price. Sri Lanka did this to South Africa at the Kotla, and South Africa made 428, and once again Dasun Shaneka paid the price. Netherlands did this to the New Zealand team, and they paid the price. Bangladesh did this to England and paid the price. Australia did this to South Africa, and they paid the price. This, to my mind, pardon the harsh word, is just idiotic what captains are doing. This is a bat first World Cup. I'll give you the example of the Indian team. India likes to field, but they have the best bowling attack in this World Cup and arguably the best bowling attack ever taken to a World Cup by any Indian team. And the targets that have been set by India's bowlers have been 192, like I mentioned, 200, 256, 270, 272. These are all gettable totals, gettable targets. When you have the kind of bowling that India have, I understand you will go out there and you will want to chase. What is New Zealand thinking when they say go bat? When your bowling is conceding 358, 340, 388 regularly, why in the world are you chasing to field? Do you have the batting to justify chasing 388? Yes, you can argue that one match they came close,
but that's one match against an Australian team that had an off day. Again, it is beyond my thinking why captains still want to chase when they don't have the batting to chase anything above 290 and when you have bowlers who can easily concede 350. Akhri baat. As a captain, would you rather, hypothetically, situation here, would you rather set a team 350 or would you rather chase 350? I think for me personally, the writing is on the wall. This is, I'll say it again, this is a bat first World Cup. Chali, I've got my bit out of the way. Let's see what you all agree, whether you agree or not. पहले कॉफी लेते हैं यार कॉफी अब तक मेरा गला खराब नहीं हुआ I'm taking some coffee here. First comment is Dharmesh. I appreciate your work, Jamie. Thank you very much. It seems again that nature is active for a useless team of Pakistan. It does seem that way, but इस बार कुदरत का करिश्मा आपको क्रिकेट टूर्नामेंट्स नहीं जिता सकता दोस्त. You need cricket planning, cricket strategizing, and cricket players to win a World Cup. Pakistan से ना हो पाएगा. Vipul, I'm very well. How are you? Do you think reservation policy, you mean the quota policy? Um, it might have. It might have. I mean, that's a very touchy subject. I wouldn't want to go there, but I think it has. गुड मॉर्निंग कमल सागर सर साउथ अफ्रीका इज लुकिंग अनस्टॉपेबल इस बार रहता फैलाने के चांसेस कम है बिल्कुल चांसेस बहुत कम है लेकिन जब कैप्टन आई मीन आप बताइए सबको पता है कि इस वर्ल्ड कप में दो साउथ अफ्रीकन टीम्स आई हैं एक जिसको आप बैटिंग पहले देंगे तो वो 400 ठोकेंगे और दूसरी टीम जो 250 नहीं चेस कर पाएगी why are teams telling them back why did Josh Butler put in this awesome South African batting lineup and lose the match by some 150 runs why did New Zealand yesterday put South Africa in क्या ये लोग इतने अंधे बहरे हैं and I didn't expect Tom Latham कल मैच के बाद to say हाँ मुझसे गलती हो गई क्योंकि हमारे कप्तान गलती मानते नहीं है लेकिन आपको पता है आपने खुद कहा इस बार South Africa looking unstoppable why in the world would you put that unstoppable batting lineup into bat first ये दोस्तों मेरे समझ से टोटली बाहर है गुड मॉर्निंग जय भाई चैतन्य बिल्कुल ड्यू आने ही नहीं दिया क्योंकि ड्यू आएगा नहीं ड्यू आता है शाम को 7:30 8 के आसपास तब तक आपका मैच आधा खत्म हो चुका है वाई और कैप्टन बल्कि मैंने हर मैच देखा है गिन चुन के मैंने 3 बार देखा है किसी प्लेयर को टॉवल से बॉल को पोंछते हुए ड्यू इज नॉट गोइंग टू कम अंटिल मिड नवंबर तब तक आपके सेमीफाइनल शुरू होंगे कितनी बार मैं आपके सामने आंकड़े पेश कर चुका हूं इस बार केवल 6 32 में से 6 बार जिस कैप्टन ने टॉस जीता और चेसिंग का फैसला लिया वो जीता है दैट शोज हाउ दिस ड्यू फैक्टर इज मैसिवली ओवररेटेड शायद ये मीडिया मीडिया बॉक्स से पूर्व प्लेयर्स की कमेंट्री सुनकर लोग इसमें फंस चुके हैं मे बी दे बिलीव आई एम श्योर दे हैव द बेस्ट टैक्टिशियंस आखिर इसलिए वो लोग वर्ल्ड कप प्लान कर रहे हैं और मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूं बट इट इज बियॉन्ड इट इज सो ऑब्वियस कि ये बैट फर्स्ट वर्ल्ड कप है Yes, Rahul, it's South Africa. Don't choke this time. They might surprise India versus South Africa final, maybe. Could be. Very, very possible. Yes, Zuri Vikram Singh blunder was done. Park has some good hopes. Again, New Zealand, again, I backed them for the top four, but look at their first 4 matches. इनके पहले 4 मैच इतनी हल्की टीम के साथ थे इंग्लैंड नेदरलैंड्स अफगानिस्तान बांग्लादेश के अचानक तगड़ी टीम के सामने न्यूजीलैंड के धागे खोल रहे हैं लेकिन आई से ये टीम खराब नहीं है ये टीम खराब डिसीजंस ले रही है टॉम लेथम ने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग पहले दिया और उन्होंने क्या 390 के आसपास बनाए कल आपने साउथ अफ्रीका को बैटिंग दिया उन्होंने 350 बनाए अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करती हो सके ये 2 मैच जीत जाती व्हाई आर यू नॉट पुटिंग साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर यस अंकित स्टैनली साउथ अफ्रीका लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रांग टीम हेलो प्रतीक should you think India should bat today? Bilkul, India has to bat. India has to bat. It's the Wankhede. It's the Wankhede. It's a flat track. You have immense success there. श्रीलंका वहां नहीं जीत पाएगी श्रीलंका की बॉलिंग बहुत खराब है इंडिया बैटिंग करने और लिख के लीजिए आज एक ओपनर से आज डबल सेंचुरी आने वाला है Ashutosh, I'm much better, my friend. I'm much better. Thank you for asking. Was New Zealand batting exposed yesterday? It was exposed in the previous match. Again, look, Devon Conway had one great 100. He's not done a damn thing since then. Will Young has not done a damn thing since he got that 70. Tom Latham has not done a damn thing all tournament. Their batting is unfortunately revolving around Daryl Mitchell and Rachin Ravindra. And you get them, the batting is exposed. Again, this team, any team will fall under pressure chasing 350 plus. I think the fact that that day in Dharamshala against Australia, New Zealand got very close, it was a mirage. It gave them unfounded confidence, misplaced confidence. कि देखो हम तो
390 से 5 रन पीछे पड़ गए, हम करेंगे? नो, इट वाज अ फ्लूक डे दैट डे यू गॉट दैट फॉर। आपकी बैटिंग में वो काबिलियत नहीं है कि आप 350 चेस कर पाए। इस वर्ल्ड कप में किसी की बैटिंग नहीं है। आई वांट टू पुट इंडिया इन देयर एज वेल। कोई भी टीम इस वर्ल्ड कप में 350 चेस नहीं कर पाएगी। बॉलिंग टीम्स, अनलाइक बैटिंग टीम्स, अंडर लाइट्स, under the so-called dew factor, it's a myth by the way, bowling teams are having far more success under lights. Look at that match in Lucknow between Australia and South Africa. When South Africa batted, the ball was doing nothing. When Kagiso Rabada, Gerard Coetzee, Nigili were bowling, the ball was doing something. Look at that match again in Lucknow between India and England. Shami, Bumrah, Jadeja, Kuldeep. They made a total of 229 look like 529. The ball is doing much more under lights. We saw this in yesterday's match as well. I don't know why Tom Latham in back-to-back matches has chosen to field. It is a blunder. I'll tell you again. If any captain wants to come and talk to me, मैं फ्री हूँ. आप मुझे यहाँ चैनल पे मिलिए. मैं आपको बता दूं. मैं कोई एनालिस्ट, इतना तोप एनालिस्ट नहीं हूं. मुझे बस क्रिकेट पता है. मुझे गट फीलिंग है. मैं क्रिकेट देख चुका हूं 28 साल से, और मुझे पता है कि टॉस जीतने वाली टीम्स इस वर्ल्ड कप में बहुत 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 कम मैचेस जीत रहे हैं. क्यों इन बड़े बड़े टीम्स जिनके पास लाखों करोड़ों पैसे कमाने वाले कोचिंग स्टाफ है, क्यों ये लोग नहीं सोच सकते? मेरे समझ से बाहर है. एंड आई एम टेलिंग यू, when this World Cup finishes on November 19th, the team that wins the World Cup will have chosen to bat or will have been put into bat. It's the batting first teams that will win the World Cup. अब कोई भी World Cup देखिए, maximum titles, maximum finals have been when the team batting first has won. 350 अगर बना दिया किसी टीम ने, जितना भी स्ट्रॉन्ग टीम हो, चेस करना आसान नहीं है. अश्विन आर्या, काश हम दोनों के पास एक एक वर्ल्ड कप टीम होती ना, हम दोनों अब तक टॉप पे होते. आपकी टीम टॉप पे होती, मेरी टीम टॉप पे होती, है ना? Kiran Mandari is back. Welcome, Dai. If England defeats Australia, tournament will be wide open. New Zealand bowlers not hitting the mark must win at least one out of the main two. They have to. Technically, this New Zealand team needed to win all three remaining matches to ensure themselves. Now they have to win 2 out of 2, and they have to ensure कि उनकी net run rate अफगानिस्तान से बेहतर हो. अगर ये एक भी मैच हारती है यहाँ से, तो जिस टीम को मैंने बैक किया नॉकआउट्स के लिए, वो नहीं जाएगी, और ये दुख की बात होगी मेरे लिए. I think people want to keep their strength for the last. Which people are these? Please show me. मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किए. 32 में से केवल 6 बार फील्डिंग लेने वाली टीम जीती है. मनीष, 32 में से 6 बार. आप खुद मैच करके देखिए कि रेशियो कितना कम है. 13 बार टीम्स फील्डिंग लेके हारी है, 6 बार फील्डिंग करके जीती है. बाकी जो जीते हैं, द कैप्टन has chosen to bat and they won, which just shows 14 times the batting team has won first. Why are teams not batting first? It's basic math to me. Do you think Markram should bat at 3 and Rassie at 4 because Rassie plays too many dot balls? That's a fact. Rassie does play too many dot balls, but again, this is not a team that's going to change too much right now. I was surprised yesterday that they didn't send in Markram at 4 and Klaassen at 5, because they're much more fluent hitters right now than David Miller. But again, Miller got the job, so Miller would probably be like, "अरे भैया तुम चुप रहो, मैंने मार दिया ना 50-29 गेंदों में." But no, I think Rassie needs to bat at 3. There's no point. There's no point disrupting the lineup right now. New Zealand has now exact 11 fit players in their squad. बिल्कुल, their chances. Let's face it. इनके चांसेस बहुत कम हो चुके, क्योंकि इनके पास इंजरीज बहुत बहुत हुई है. लेकिन इंजरीज के बावजूद ये टीम 4-0 थी. They're losing matches, yes, because of um, injuries, but also by making the wrong decision at the toss. Why are you chasing? Look, Afghanistan have 3 matches left. They will beat Netherlands. Can they beat Australia at the Wankhede? No. Can they beat South Africa? Yes. If South Africa are put under pressure, they could. But again, 10 points may not guarantee. I would love to see them do it, but mushkil hai bhai. You want India to chase against. Yeah, India have chased in 5 out of 6 matches. India will chase, no problem. But this Indian team will not be able to chase above 300. तो जब आपको already पता है कि इंडिया 300 ज्यादा नहीं चेस कर पाएगी, हारना क्यों है? बैटिंग करो. I will say it again. I'm surprised people are not understanding मैं क्या कह रहा हूँ. इस वर्ल्ड कप में 2 साउथ अफ्रीकन टीम्स खेलने आई. एक वो टीम जिसको अगर आप उन्हें बैटिंग देंगे, वो 400 मारेंगे और वो मैच जेब में रखकर होटल वापस जाएंगे. दूसरी साउथ अफ्रीकन टीम वो है जो नेदरलैंड्स के सामने 245 चेस नहीं कर पाई और पाकिस्तान के सामने 260 265 के आसपास टारगेट को 1 विकेट से जीती. इट्स क्लियर एज क्रिस्टल. यू वांट टू बीट साउथ अफ्रीका,
Do not, bloody hell, do not put them into bat. उनको चेस पे मारो. साउथ अफ्रीकन टीम 250 से आगे साउथ अफ्रीकन टीम आसान से चेस नहीं कर पाएगी. और यहाँ टॉम लेथम, जॉस बटलर कह रहे हैं बैटिंग करो. जॉस बटलर ने इनको बैटिंग दिया, इन्होंने 400 बनाए. टॉम लेथम ने इन्हें बैटिंग दिया, ये 350 मार गए. India need to bat first at the Eden Gardens on Sunday and they will win this match. If they chase and their bowler, again, India is only playing with five bowlers, remember. जब तक हार्दिक पांड्या आएंगे आप फाइव बॉलर से खेलोगे. कि आप फाइव बॉलर्स को लेके अब तक बेहतरीन बॉलिंग कर चुके हैं, लेकिन हो सके आपका एक खराब दिन आएगा. अब तक इंडिया का खराब दिन नहीं आया ना विद द बॉल. बैटिंग में आ चुके हैं दो तीन खराब दिन, बॉलिंग में आपके खराब दिन अब तक नहीं आया. मान लो ये साउथ अफ्रीकन टीम ने 400 मार दी ईडन गार्डन्स में, क्या आप चेस कर पाओगे? नहीं. So why are you even thinking about chasing against South Africa? It makes zero sense. Ashutosh, yes, I did a show. I did a show 2 days ago on this very topic. Is this the best bowling attack? I guess you missed that one. It is the best one. And I did a detailed show. So yes, please go watch that one. Should India continue with Iyer? One more match. If he fails today against Sri Lanka, Iyer out, play Kishan. धर्मेश कह रहे हैं you were absolutely right. It's quite weird why teams are inviting South Africa to bat. I mean, stupidest decision of any captain. Joss Butler, stupid decision. Tom Latham, stupid decision. Dasun Shanika, thank God he's back in Sri Lanka. Stupid decision. आप देख लो, टीम ने कहा साउथ अफ्रीका बैटिंग कर लो. 428, 400, 360, 340 के आसपास. I mean, it's crazy. Damuru keh rahe hain, no major comments or question, but I want to appreciate how well you're covering the World Cup. Arey wow, thank you, my friend. Thank you, so sweet. And coming live on regular basis. I do it all for you guys, my friends. And some lower order hitting. Yes, that too, that too, that too. Thank you, my friend Damuru. Very, 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 very sweet of you. Hi, Jamie. Hi, Dhruv. I think the only box to take for India is to chase a target of more than 300 and some lower order hitting. कर लो. चलो, आप में से कुछ लोगों को लगता है, सुशांत also said India should be tested. कर लो. साउथ अफ्रीका के सामने मत कर लो यार. श्रीलंका के सामने कर लो. Netherlands के सामने कर लो. Because South Africa is the only team which has the capability of hitting the best bowling attack in this World Cup for 350. और 350 इंडिया से नहीं हो पाएगा. निगीदी, रबाडा, महाराज, कुत्सिया नहीं होगा यार. 350 नहीं हुआ. अब तक इंडिया ने चेस ही क्या किया? 192, 200, 256, 270, 265. इंडिया 290 के अंदर चेस कर लेगी. भाई न्यूजीलैंड के सामने मैच फंस चुका था ना, जब टारगेट कितना 275 का था. जिस दिन ये टोटल 300 से पार गया, इंडिया का 25% कॉन्फिडेंस वहीं जाएगा. आई गेट द लॉजिक. यू वांट टू बी चेस्ड, यू वांट टू चेस अंडर प्रेशर, कर लो. खुदा के लिए भाई साउथ अफ्रीका के सामने मत करना. इनको बैटिंग कराना. Yes, Dhruvesh, India should bat today. I agree. Did NZ miss Kane? Obviously. Ashutosh कह रहे हैं SA can chase totals of about 350. They keep Miller and Klassen out till 35th over and score about, well, maybe you have that faith. I don't, because on the basis of their stats, not just in the World Cup, but in the last 12 months, they do not chase very well when the total hits 250. It's a fact. They couldn't chase 240 against the Netherlands, with all due respect, ranked 14th, and they barely chased 260 against Pakistan. So I'll have to disagree with you. The moment South Africa see more than 250, इनके सारे ये बड़े-बड़े Miller, Klassen, ये सब फुस है. You have doubts? Stick around. World Cup's not over yet. I will prove to you by the end of this World Cup that South Africa cannot chase more than 250. Dekhna. I've been watching them since 1996. Okay, Shardul is a better batsman than Shami. Yes, but he cannot. No, Shardul is a better batsman, but he's not a better bowler and he's not been in form. Had Shardul been in form, Shami would not been playing these matches. Shardul ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा, बैटिंग एब्सेंट करके और बॉलिंग एब्सेंट करके. Quinton de Kock. Quinton de Kock has played a lot of IPL, but I think I'm seeing a question about Ben Stokes. We'll get there. Quinton de Kock इतने रन मार चुके हैं क्योंकि सारे विकेट्स पाटा हैं, क्योंकि इनको बहुत अनुभव है यहाँ खेलने का. और सबसे बड़ी बात, जो उसने ऑलरेडी बता दिया कि मैं नहीं खेलूंगा इस वर्ल्ड कप के बाद, ही इज डन. ही इज गोना स्टॉप प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर दिस वर्ल्ड कप. मेंटल चाबी खुल चुकी है. बंदा आजाद है, आजाद. He's not looking bothered. He's not looking worried. He's become the first South African, and there have been much better South African players than him to play for South Africa. He's become the first South African batsman to cross 500 runs in one World Cup, not because of his skill or IPL. It's because he's mentally free.
when you're mentally free. South Africans do not win tournaments. South Africans choke because they have mental blocks. Not because of batting, bowling, and fielding skill. Not because of cricketing skill. Not because of cricketing logic. South African teams don't win titles because they have a mental block. डिकॉक ने वो चाबी खोल के फेंक दिया. मैं तो इस वर्ल्ड कप के बाद हुई नहीं. तो जो आजादी उस बंदे को यहाँ मन में मिल गया ना, it's allowing him to bat freely. So that's the reason why he's scoring runs. Is Ben Stokes overrated? No, not at all. Ben Stokes is a fabulous player. Dosto, I have to get off the stream. I have another live stream in exactly 7 minutes. You can join me on Raposo. 10:30 every morning, I do a live stream there. I'll be talking about India versus Sri Lanka. I'll be talking about the toss, but I'll also be sharing with you my fantasy picks. So come over in exactly 7 minutes to Raposo, Roposo. It's an app. It's free. It's on the Android store. It's on the Google. It's on the Apple store. Basically, Android के लिए है, iPhone के लिए. Come and see me in exactly 7 minutes on Raposo. Love you all. मैं आपसे मिलूंगा इस चैनल पर आज इंडिया श्रीलंका मैच के बाद. Love you all. Take care. जय हिंद.